Hello and welcome back on Pitside. We're discussing Pakistan's win. A huge congratulations to them. What a fine performance overall by this side. I've been joined by a very, very special guest along with Wakar. Salman, many congratulations. Fantastic win and fantastic catches. Let's talk about the catches first because you were absolutely brilliant in the slips. We just have been doing really, putting the hard works in the field, like having long session in the slips. So I think that's what we are doing, and I think in this test match that's paid off. अच्छा, आपने कहा कि हार्ड वर्क किया स्लिप्स में, वहाँ पे क्या नेट्स में प्रैक्टिस करते हैं? ये जो लो डाइविंग कैचेस होते हैं, इनका क्या आर्ट क्या है, स्किल क्या है? इसमें एक यही है कि आपको ज़्यादा सा लो रहना पड़ता है, और हम जब प्रैक्टिस कर रहे थे हमें आइडिया था पिच को देख करके इधर कैचेस लो ही आएंगे, तो हम उसी को देखकर प्रैक्टिस कर रहे थे, और कोशिश यही थी कि जितना लो रह सकूँ स्लिप में रहूँ, क्योंकि यहाँ पर कैचेस अगर आप देखें पाकिस्तान में रिसेंट पास में कैचेस आपके पास इस तरह ही पाउंड में ही आते हैं, तो मेरी कोशिश यही रहती है जब मैं प्रैक्टिस करता हूँ तो उसी तरह की प्रैक्टिस करूँ जिस तरह मैच में कैचेस आने वाले हैं। अच्छा वकार, ये स्लिप्स में जो कैचेस होते हैं ये कभी भी आसान नहीं होते, स्पेशली अगर आप इतनी देर कंसंट्रेशन का थोड़ा सा बताएं कि बिकॉज व्हेन वी सी समबडी लाइक सलमान हर बॉल पे देयर इज नो रूम फॉर एरर बेसिकली। टेस्ट मैच क्रिकेट अगर आपने खेलनी है तो फिर यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड एंड हैव द फिटनेस, क्योंकि नॉट कि जी आप सिर्फ आपको बॉलिंग और बैटिंग की ही फिटनेस चाहिए होती है, आपको एक्चुअली 6 घंटे के लिए अगर आपने फील्ड में खड़े होना और स्लिप में खड़ना और फोकस करना है, उसकी भी एक फिटनेस है। एंड आई थिंक सलमान ने बहुत ही उम्दा कैचेस किए हैं, और स्पेशली इस तरह की पिच पे जहाँ पे बॉल आता नहीं है ना, जब बॉल डाई होता है, जो बॉल नीचे आता है उसमें और मुश्किल हो जाता है। स्पिनर पे तो होता है मुश्किल, पेसर पे तो इससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो आई थिंक पाकिस्तान हार्डली ड्रॉप एनी कैच थ्रू आउट दिस टेस्ट मैच, एंड दैट्स ऑल्सो वन रीज़न why Pakistan won this test match. Salman Ali Agha, not only the catches but also don't forget his runs. Is the very crucial, important runs in the first inning, 93. I thought that was wonderful. Absolutely, 93 you made Salman in that first innings. And जब भी कोई टेस्ट मैच होता है पहली इनिंग्स बैटिंग की हमेशा इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज उसी से फिर आपका पूरा जो है मैच आगे बढ़ता है। तो क्या सोच के आए? कंडीशंस ऐसी थी, मुतसामी बहुत अच्छी बॉलिंग करा रहे थे, उनके भी स्पिनर्स दे वर डूइंग वेल, सो व्हाट वाज योर प्लान अगेंस्ट दैट स्पिन अटैक? जी बिल्कुल, आप पाकिस्तान में अगर खेलें रिसेंट पास में हम देखेंगे कि पहली इनिंग के रन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली इनिंग ऐसी इनिंग होती है जहाँ पर थोड़ा सा इजी रहता है बैटिंग करने के लिए। तो जब बैटिंग करने गया तो हम थोड़ा सा 3 विकेटें जल्दी गिर गई थी, लेकिन मैंने और रजी ने एक चीज़ मतलब हमने उस टाइम पे डिसाइड की थी कि हमारी गेम अगेंस्ट स्पिन अच्छी है, हम अगर अटैक करते हैं स्पिन पे तो हमारा मतलब बेस्ट पोजीशन बनती हैं, तो हम कोशिश यही करते हैं दोनों ही मिलकर जब भी साथ बैटिंग करें तो कोशिश यही करते हैं कि स्पिन पे अटैक करें। और मुझे लगता है कि उस इनिंग की जो मुझे उस पार्टनरशिप की अब कह लें कि जो बेस्ट थिंग थी ना, हमने स्ट्राइक रोटेट काफ़ी अच्छा किया, क्योंकि ये ऐसी पिचेज़ हैं अगर आप इस पे 6 बॉल लगातार खेलेंगे ना दैन फिर आपके लिए चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। तो कोशिश यही की कि हम जितना स्ट्राइक रोटेट कर सकें उतना ही फ़ायदा हो। सलमान, सवाल यह है कि अब आपने यहाँ भी वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ भी खेला, आपने अगेंस्ट इंग्लैंड भी अभी रिसेंटली, दोनों अच्छी सीरीज़ खेली, एक टर्न अराउंड सा दिख रहा है कि जी अब जैसे लग रहा है कि जैसे हम अब आइंदा आने वाली क्रिकेट भी टूवर्ड्स स्पिनर्स पे ज़्यादा रिलाई करने के चक्कर में है, और उस तरह की पिचेस हर जगह पे पेयर कर रहे हैं। यू थिंक कि ये लाहौर की पिच और फिर ऑफ कोर्स मुल्तान की पिच, ये दोनों पिचेस में कितना फ़र्क है, और इज़ दिस द राइट वे टू गो? आई थिंक मुल्तान और यहाँ पे मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस था, क्योंकि मुल्तान में ऐसी पिच थी कि जहाँ पर मुझे लगता है कि थोड़ा बैट्समैन के लिए चीज़ें काफ़ी मुश्किल थी। अगर आप अच्छी टेक्निक रख के भी खेलते हैं तो वहाँ पे आउट हो सकते हैं, लेकिन ये ऐसा पिच था जहाँ पर आप अगर अच्छी टेक्निक स्पिनर के अगेंस्ट आपकी है तो मुझे लगता है कि आप रन बना सकते हैं, जैसे कि आपने पहली इनिंग में देखा उनकी तरफ से भी हमारी तरफ से भी रन बने हैं, और इवन दूसरी इनिंग में भी। तो मुझे लगता है कि दो जो पिचेज़ हैं या 2 शहर हैं आप कह लें, उनमें काफ़ी डिफरेंस था, और हमें देखना तो पड़ेगा कि हमको इस तरह यही गोइंग फॉरवर्ड है या हमको चीज़ें डिफरेंट करनी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हर टीम के खिलाफ हम ये वो नहीं बना सकते। जैसे श्रीलंका यहाँ पर आएंगी तो वो उनके खिलाफ अगर ऐसी पिचेस बनाते हैं तो फिर हम भी मुश्किल में आ सकते हैं, तो हमको ये देखना जरूर पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर हम साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड या न्यूजीलैंड के खिलाफ खेल रहे हैं तो मुझे लगता है कि जो ये पिच था ना, ये पिचेस अच्छी हैं गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि लाहौर की पिच की नेचर नहीं है, शायद इसी वजह से बैटिंग थोड़ी सी आसान थी। इस पिच की नेचर है कि यहाँ बैट्समैन ज़्यादा रन करते हैं, और तो इसलिए स्पिनर्स का बॉल भी जो आता था तो थोड़ा स्लो आता था, तो मैनेजेबल था। शायद रन करने उतने आसान नहीं थे, लेकिन आउट अगर आप नहीं होना चाहते या आप नहीं होते तो आप मैनेज कर सकते थे। हाँ, मुल्तान का थोड़ा डिफरेंट था।
जी बिल्कुल, मुल्तान में मैंने पहले भी बोला कि वहाँ पर थोड़ी सी ऐसी थी कि वहाँ पर अगर आप जितनी भी अच्छी टेक्निक रख लें, लेकिन आप वहाँ पर मुश्किल था बैट्समैन के लिए। लेकिन यहाँ पर आपने बिल्कुल बोला, यहाँ पर मैंने वैसे ऐसे अपनी लाइफ में देखा नहीं, मैंने अपनी सारी फर्स्ट क्लास क्रिकेट और मतलब मोस्टली क्रिकेट यहीं खेली है। यहाँ पर आपको बहुत अच्छा बैटिंग ट्रैक मिलता है, यानी कि 4 दिन यहाँ पे कुछ खास होता नहीं है। ये मतलब ऐसा ग्राउंड है जहाँ पर आपको मतलब बड़ी बड़ी इनिंग्स नज़र आती हैं। लेकिन हाँ, ये डिफरेंट मतलब ये लाहौर की पिच थी, लेकिन हाँ कह सकते हैं कि मुल्तान से मुझे लगता है काफ़ी बेहतर पिच थी। अच्छा, कल जब स्टंप्स के वक्त आपको 8 विकेटें चाहिए थी पाकिस्तान को मैच जीतने के लिए, तो तब क्या डिस्कशन हुई थी बाद में मैच के बाद, या आज शुरू में क्या डिस्कशन हुई थी कि मैच को कैसे लेके चलना है इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग कॉम्बिनेशंस, एंड प्लान क्या था? प्लान सिंपल ही था, क्योंकि अभी मुझे लगता है कि ऐसा पिच बन गया था कि अगर आप सिर्फ राइट एरिया पर आकर अच्छी पेस के साथ बॉल करें स्पिनर, तो मेरे ख्याल से वो काफ़ी इनफ था किसी भी टीम को आउट करने के लिए। और 270 प्लस आई थिंक रिसेंट पास में पाकिस्तान में 4th इनिंग में मेरे ख्याल से काफ़ी मुश्किल है। इवन अगर आप कहीं भी चले जाएं तो 4th इनिंग में 270 प्लस मुश्किल ही होता है। तो प्लान यही था, सिंपल था कि आकर जगह पर बॉलिंग करनी है और अच्छी पेस के साथ। लेकिन आप कह सकते हैं कि आज जैसे मतलब ये रिसेंट पास में देखने को नहीं मिला कि फास्ट बॉलर्स ने इतना अच्छा रिवर्स किया हो। तो शाहीन और हसन को आपको क्रेडिट देना पड़ेगा, क्योंकि उन लोगों ने चिप इन किया, मेरे ख्याल से मोर देन चिप इन किया। तो वो एक चीज़ जो थी ना, वो मेरे लिए सरप्राइज थी, क्योंकि मैं रात यही सोच रहा था कि अगर हमको ये मैच जीतना है तो सज्जू और नोमी भाई को मैच जितवाना पड़ेगा। लेकिन शाहीन की आपको यहाँ पर तारीफ करनी पड़ेगी, उन्होंने जिस तरह स्पेल किया। सलमान, एक और चीज़ रिसेंट पास में देखी है कि विकेट्स जो पाकिस्तान की हैं ना, वो क्लस्टर में गिर रही हैं। एक ही स्कोर पर 2-2, 3-3 विकेट्स गिर रही हैं, या 15-17 रन में 5 विकेट गिर गई। इवन इन द एशिया कप में भी देखा कि 33 पे हमने 7-8-9 विकेट गिर गए। तो आई थिंक ये कहीं ना कहीं थोड़ा वरिंग साइन है। आई मीन वनडे क्रिकेट तो फिर भी, या T20 क्रिकेट फिर भी समझ आती है कि आप अग्रेसिव खेल रहे होते हैं, तो ये वरिंग साइन है। हालांकि आपके जो हमारे लोअर मिडिल ऑर्डर या टेल एंडर जो भी कह लें आप, उनकी एवरेजेस या उनकी जो ट्रैक रिकॉर्ड फर्स्ट क्लास का भी बहुत अच्छा है। लेकिन इस मैच में देखा कि इवन पिछली सीरीज में भी यही देखा कि क्लस्टर में विकेट्स गिरती हैं, 5-6 विकेट ऊपर नीचे गिर जाती हैं। और फिर ऑफ कोर्स अभी तो आपके पास लीड थी तो आपकी बचत होगी, लेकिन आइंदा अगर लीड ना हुई तो इस तरह का जो इश्यूज हैं ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ये एक वरिंग साइन तो है। मतलब अगर आप वनडे देखें, T20 देखें या टेस्ट मैचेस, तीनों फॉर्मेट में मेरे ख्याल सेम स्टोरी चल रही है हमारे साथ। हम थोड़ा सा प्रेशर आता है तो हम उसमें 4-5 विकेटें मतलब दे देते हैं। कल जैसे हमने मतलब 16 रन पे 6 विकेटें दे दी। तो किसी भी अच्छी टीम के खिलाफ खेल रहे होंगे तो आप ऐसे, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम ऐसी मिस्टेक्स बार बार करते जाएंगे तो फिर मैच हम जीत सकते हैं। लेकिन अगर हमको देखना है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलना है तो उसके लिए हमको ये चीज़ सॉर्ट आउट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये वरिंग साइन ज़रूर है और कंसर्निंग भी है, और इस पर हमको काम करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा, ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी पाकिस्तान की तरफ से। ऑफ कोर्स आपकी अपनी कंट्रीब्यूशन। आपने बैटिंग की बात की, आपने कहा मैं आई वाज लुकिंग टू रोटेट, एंड आई वाज जस्ट गोइंग टू आस्क यू दिस क्वेश्चन कि इन कंडीशंस में स्पिनर को खेलना बहुत मुश्किल है। फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान, इट वाज द अदर वे राउंड, पाकिस्तान आखिरी इनिंग्स खेल रहा होता, बैटिंग कर रहा होता, तो क्या अप्रोच होनी चाहिए? बिकॉज यू नीड टू फिगर आउट, लेट्स से पाकिस्तान लूजेज द टॉस, फिर एंड में आपकी बारी आ जाती है, तब अच्छी टीम हो, उसके पास अच्छे स्पिनर्स हो, तो बेस्ट प्लान क्या है जहां पे बाउंस भी लो है, कभी इन वेरिएबल बाउंस है ना, कभी ऊपर कभी नीचे। सो हाउ डू यू काउंटर दैट एज अ प्लेयर इन योर हेड, एटलीस्ट मेंटली? व्हाट आर यू थिंकिंग? मुझे लगता है कि ऐसी पिचेस देख के ना हम बैट्समैन, अब देख लें कोई दोनों टीमों में से, आप अपने ना डिफेंस को ट्रस्ट करना छोड़ देते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको किसी तरह भी बैटिंग करनी है, अगर आपको स्वीप मारनी है, रिवर्स स्वीप मारनी है, या किस तरह भी आपको स्ट्राइक रोटेट करना है, लेकिन द फर्स्ट जो थिंग है ना, वो आपको अपने डिफेंस पे ट्रस्ट करना ही करना है। क्योंकि अगर आपका डिफेंस अच्छा नहीं है, उसके बाद जो अगर आप स्वीप मारे, रिवर्स मारे, वो मैटर ही नहीं करती हैं जब तक आपका डिफेंस अच्छा नहीं है। मुझे लगता है ऐसी पिचेस पे ना हम एज ए बैट्समैन शायद अपनी टेक्निक पे या अपने डिफेंस पे ट्रस्ट करना छोड़ देते हैं। तो वो आप किसी भी इनिंग में खेल रहे हैं, आपको वो ट्रस्ट जरूर करना है अपने डिफेंस पे। अगर आपको लगता है कि वो अच्छा नहीं है तो उस पर आपको काम करना है, क्योंकि बाकी चीज़ें तो बाद में आ गई। पहले सबसे पहले तो इंटरनेशनल क्रिकेट में और इवन टेस्ट क्रिकेट जैसे है, वो आपका टेस्ट करती है आपका डिफेंस का, तो वो आपको अच्छा करना ही करना है। ठीक है, ये जाते जाते बताएं, डू यू एंजॉय बॉलिंग एज वेल? क्योंकि हम देखते हैं आपने विकेट भी ली वहाँ पे आके, उस तरह से। सो इज दैट समथिंग दैट यू एंजॉय? बिल्कुल, मैं जिस नंबर पे खेलता हूँ साथ में पे, उसमें आप देखेंगे मोस्टली सिर्फ बैट्समैन तो खेल ही नहीं सकते। तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं बॉलिंग और फील्डिंग दोनों में कंट्रीब्यूट करता रहूँ। और उस दिन विकेट वो उस टाइम ज़रूरत भी थी, और आई एम वेरी हैप्पी कि उस टाइम पे विकेट मिली है, क्योंकि अगर वो विकेट ना मिलती तो शायद हम इतनी लीड ना भी ले पाते। लेकिन बिल्कुल मैं अपनी बॉलिंग भी इंजॉय करता हूँ, क्योंकि मुझे ऑलराउंडर ही खेलना है एज ए टीम में। चलें, ठीक है, थैंक यू सो मच सलमान, वेल डन वंस अगेन, एंड a huge congratulations to you and everyone else involved in orchestrating this win. And that was Salman Ali Agha for you, just talking about the win, talking about his batting, how to play spin, how to catch those wonderful ones that he took in the slips and all of that. So we'll take a short breather and we'll see you guys on the other side.
back on pitch side, and just before the break, we were having a word with Salman Ali Agha, just talking about his batting and also the way he fielded in the slips. Overall, a great performance by Pakistan. So, a huge congratulations to him and the team as well. We've now been joined by Sean Pollock. Sean, South Africa had their moments. Looking back at this test match, there were moments where you felt like there were moments of brilliance with the bat, with the field, with the ball, but perhaps just not consistent enough. How would you sum up this test match for them? Yeah, you have to string those things together. It can't just be isolated performances that are going to get you successful or not. I think Pakistan credit must go to them first of all. You know, you got to say they win the toss or the toss goes in their favour. And with that advantage, it was an advantage on that pitch. You have to post something substantial. They nearly get 400, and then they came out and bowled well, and South Africa were always behind the 8-ball after that. I think Pakistan can also improve. I mean, what did they lose? It was 16 runs for 5 wickets and 17 for 6 in the second innings. So they can get better, and South Africa need to be aware of that. Yeah, I agree with you. Some positives for South Africa, some of the batting, some of the game plans, some of the bowling. Keshav Maharaj coming back into the mix, so all those things are positive. But unfortunately, at this top level, it has to be a consolidated effort. It can't be isolated performances if you're going to compete on foreign conditions like you've got here in Pakistan. So South Africa will go away, and they'll focus on the positives because that's what you have to do with such a quick turnaround time. But I think also they'll be a bit disappointed in certain aspects, like dropping the catches in the first innings. That didn't contribute. I thought some of the shots when they came out to bat, there was a few soft dismissals, which you can't afford to because you have to get that big score. And it'll be interesting to see what composition of a test team they go in with the next game. Just another thing, we had Salman Ali Agha before you came, and he was talking about the fact that they were a little sort of surprised that they didn't see much of Rabada when the ball was reversing from South Africa, because we saw that from Shaheen towards the end of the day. I mean, do you think perhaps his utilization could be better, or how would you look at that decision? Yeah, I think from his perspective, he probably looks at the test match, and after that first innings, he probably thought, well, how am I going to play more of a role? I was really impressed by what I saw from him in the second innings, and I almost felt like Shaheen Shah Afridi took a feather out of his cap and was inspired by what he saw from Rabada in those 2 spells, one with a new ball and then one after the lunch break. And you've got to have that belief. Mentally, you've got to think, well, it's a flat surface. You can either go into the attitude of, I can't play much of a role, or I'm still determined I'm going to play a role, even though conditions aren't really suiting me. And they got to get that ball reversing. It's getting scuffed up. There's no doubt that it's going to be one of the weapons to be used in the rest of the series. And Shaheen Shah Afridi has shown exactly what can be done, and maybe Rabada in the next game gets inspired by what he saw from Afridi. Yeah, I mean, Waqar, we've spoken a lot about the spinners actually, but Shaheen Shah Afridi, he's been the standout bowler, fast bowler from Pakistan. What did you make of his spell today? I think when you push him in the corner, he always come out good. Even in the white ball cricket also, when he got criticized or got dropped, he came back very strongly. He was a different bowler altogether. He's learnt a different art. And I think even in Test match cricket, he's still learning. He's still, sort of finding the right lines and right lengths. Especially when you're playing on this sort of surfaces. When you bowl too full, it's easier to bat. And when you bowl that length, that back to the good length is the perfect length. And he's done it beautifully. He swung the ball. The ball is going to get reversed. Even going to Rawalpindi, I think it's going to be very much the similar story. The pitch is going to be pretty much the same, and the ball is going to get old, maybe a little cooler, but maybe a little bit more bounce also. I think Pindi pitch always offers a little bit more bounce, but reverse swing will come into play, and I think all the faster bowlers should not feel that they're out of the game. You know, as you said, Rabada has shown it, now Shaheen shown it, Hassan has shown in short spells also. So, you know, it's not a bad idea to have 2 spinners and 2 pacers in the side rather than, only relying on spinners. The other thing to mention is he wasn't even in the test team in South Africa. What was that, 9 months ago? Yeah. He wasn't. He wasn't even in the squad. About that, never been in the test team. So obviously being dropped by that's inspired him, and he's come back stronger. Yeah, exactly. Just in terms of Waqar, these conditions, is it a huge advantage for a side to be winning the toss though? Because we've seen that they're batting last. The team that doesn't win the toss is batting last. Is it a huge advantage to whoever wins the toss? Yeah, well, this pitch was definitely a big advantage. If you see a similar pitch in Rawalpindi, yes, it's going to be a huge advantage, because batting on first inning is the way forward. And I think
win the toss, I think you'll win 25% of the game, and then you got to really play badly to sort of lose the game. So I feel, the toss is not in your control, of course, but you got to hope and pray that you win the toss and then you bat really well. And I thought Pakistani batted quite well. It's just that the South Africans didn't catch. If they would have caught first inning, things would have been a little different. Just in terms of the changes that you'd like to see for the next test match going ahead, Polly? Yeah, I'm always loath to drop a young fella because I kind of feel that if you're building someone for the future, you need to give him as many chances. But Tristan Stubbs is struggling at the moment. So David Bedingham, he's been playing a whole season of county cricket. So I wouldn't be surprised if they decide to go that route and get Bedingham in place of Stubbs. Bowling-wise, Keshav Maharaj has been such a stalwart, and on these conditions, you would just imagine that he'd be effective. So who gives way? I think Sabran might give way because you had the off-spin of Simon Harm. I thought he was the best off-spinner on offer of the two. I suppose there might be the temptation to go the Marco Jansen route because on a surface that's holding, he can get it to bounce or not bounce and maybe get it to stop on the surface. We'll have to see about that. But if I was a betting man, I'd say Maharaj comes in place of Sabran and probably play Bedingham in place of Stubbs. Would you play 2 spinners rather than 3 spinners? Play 2 spinners and play Johnson as an all-rounder, so a bit more balance or better balance, would you think? You could go that route, but I suppose, how do you drop Mutasamy? He's just picked up 11 wickets in this test match and looked really effective. Yeah. So it would be a harsh one to say, okay, Sen comes in place of, Keshav comes in place of Sen Mutasamy. He's the man in possession. He only didn't play because he was injured. And then Jansen would place Sabran. It could be an option. I suppose we'll be gauged by what the surface is going to do and what South Africa thinks would be most effective. Well, South Africa can certainly sort of take heart from some of the performances that we saw. You spoke about Ryan Rickelton struggling in, I suppose, the white ball format before coming into this series. So it was good to see him score runs, especially the way he played spinners. I think others can perhaps take a leaf out of his book. Yeah, I think Pakistan and the supporters and the players would have massive respect for Ryan Rickelton. He got that 200 in Cape Town, and now he's come and performed well in these 2 innings. He's a class player, and I think it's always a bit of an adjustment. After he had a good season and a good IPL, he went through a bit of a lean patch, didn't go great in the World Test Championship final, and then in the white ball series against Australia, also didn't really get amongst the runs. But invariably, when you're class, when you've got a good technique and you're a wonderful player, it comes good. And I think his plans were good. I think he didn't allow people just to bowl at him. He played the reverse sweep, played the orthodox sweeps, rotated strike. So that was really good signs from him, and De Zorzi, I think, were the pick. I think Aidan Markram would be the one who'd maybe be disappointed. We saw him get 100 or 2 here when he toured last time, which was a couple of years ago, and he likes batting on these surfaces. So that's the only person who I think maybe underperformed from a batting perspective. But as far as Rickelton, setting the tone at the top of the order, wonderful. From a Pakistan perspective, would you like to see any changes at all, Waqar, or are we sticking to the same team, the winning combination, as we like to say? Look, I thought, maybe if these 2 spinners gonna really bear the load, would you bring in another spinner in the side and leave the one fast bowler out? But what I saw in the second inning from Shaheen and Hassan Ali, I thought. No, I think I'll stick to both pacers and of course 2 spinners, because Pakistan do have Salman Ali Agha who can bowl off spinners. So 3 spinners, 2 regular spinners and a spinner, and then of course a genuine pace attack. So I think I don't really see Pakistan making any changes. I think the good news for them is how quickly this game is finished. Just 3.5 days basically means that they've got that extra day and a half rest. If it had gone the full 5 days, then maybe you need to reinforce the bowling stocks, because the spinners would have been really tired and probably wouldn't recover in 3 days. But I think because they've got 4.5 days now before the next game, I'm sure they'll be fine. You spoke about Sajid Khan's pace, actually, and did you see any changes today from whatever we've seen so far? Because you said that he's been bowling perhaps a tad bit slower. Yeah, he was out there this morning, before anybody else arrived, and he was just going through his, rituals and practice, and he was trying to do, trying to bowl a little quicker, because over here or in these conditions, pitches go really slow, and it's easy to manage at the back foot. So you have to really push hard and try to generate that pace around about 85
kilometers an hour or maybe sometime 90 kilometers an hour to get something out of this surface, which Noman did nicely. So he's got to push it. I've not seen much change because it takes a long time to sort of change your, bowling. So I feel that, he's getting better. From the first inning to second inning, I think he was much better. So hopefully he will, with this few days rest, he'll recover and then come back stronger. In terms of the leadership then, I mean, were you happy with that from whatever you saw in terms of bowling changes and tactics, on-field tactics? Obviously different conditions, so the leadership does come into play. Talking about South Africa leadership? Yes. Yeah, it's difficult. You come with ideas and plans and you have to be adaptable. It's not conditions you play on a daily basis. Maybe Keshav Maharaj comes into the side and he's got different ideas about what field settings he wants. But as a captain, you speak to your bowlers and say, okay, where do you think you're going to be most effective? Where do you think we're going to pick up wickets? And then you try and adapt it accordingly. I don't think he could have done much more. I think in all honesty, as Waka touched on it, I think the catches in the first innings cost them. They probably should have bowled Pakistan out for about 340, and that would have given them a bigger chance. And maybe they should have compiled a little bit more in the first innings. Dazorzi, when he got out, he was batting with Harmer. If they could have carried that partnership on, it would have been a bit closer after the first innings with regards to the deficit, and they would have had a chance. But in all honesty, Pakistan, throughout the test match, were the better unit. Probably I feel that, knowing Pakistan, doesn't matter what surface they play, knowing how they play against the pacers, South Africa do need another pacer in the side. I mean, we saw Rabada really getting into the rhythm, and he looked really, really good for good 7-8 overs. So maybe another pacer. I feel that the pacer is must. Like Pakistan have two pacers. We saw them, getting some sort of help from the surface, or maybe a reverse swing. Not sure if in that camp there is another pacer who can do that, but I feel one pacer is not enough. Yeah, I think we've seen over the years, in the West Indies when they were at their pomp, you had your big fast bowlers, and no matter what surface you play on, if you're tall, you can have an advantage, particularly if it starts to go down, up and down. So that's why Marco Jansen will have a case. I think he's the one who could maybe put his hand up. I don't see them going to Corbin Bosch, but if they want a left arm option, coming from a different angle, and the fact that he's a decent batter and can contribute, you never know, they might go for him. But I'll be interested to see. If it's going to be spin friendly, I think they might go the 3 again. All right, thank you so much, gentlemen, then, for your thoughts. We've had an early finish, so great news for you, because you get to catch up on your sleep and basically explore the sights and sounds of Lahore tomorrow. So good on you, Polly, and everyone else. But don't forget that the action doesn't end here in this particular series. It's the Vigotel Mobile presents Bank Alfala Test Series, and the next test match is going to be played in Rawalpindi on the 20th of October, where the coverage starts at 9:25 a.m. Well, all the action from Lahore ends very much here. Pakistan leading this series 1-0. We've had an action-packed 3.5-4 days, and I hope that you've enjoyed this coverage. We'll see you now on the 20th of October for the second test match. Until then, it's goodbye from all of us.